Good morning, students. I hope that you are staying home, staying safe. Students, on Monday, I taught you chapter 2nd, Rights in the Indian Constitution and Directive Principles of State Policy, Part 1. Today, I am going to start second part of this chapter, Rights and Directive Principles of State Policy. Reminding you whatever I taught you on Monday. First was why fundamental rights included in Indian Constitution. Second was meaning of fundamental rights, and third was different types of fundamental rights. Next topic, my fourth topic, and today's first topic is right to personal liberty. Among all the rights, right to personal liberty is very much important. It has been mentioned in our constitution from article 22. From article 22. Article 20 lays down that no person shall be convicted to any offence except for violation of law in force at the time of the commission of the act charged as offence. No person shall be subjected to a penalty greater than that which might have been inflicted under the law in force at the time of the commission of the offence. Next, no person shall be prosecuted and punished for the same offence more than once. Next, no person accused of any offence shall be compelled to be a witness against himself. Now, Article 21, it is very important. Article 21 provides that no person shall be deprived of his personal liberty except procedure established by law. No person can be arrested in any arbitrary manner, nor can be detained for an indefinite period. Students, that's why from above explanation, I hope that you can go through why it is right to personal liberty is very much important for anybody whosoever is the citizen of India. ये नहीं है कि आपको ज़बरदस्ती जेल में नहीं डाल सकते जब तक कि आपको ये ना मालूम चले कि आपकी गलती क्या है. कहीं कहीं आपका कोई अपमान नहीं कर सकता. आपकी जो लिबर्टी स्वतंत्रता है उसको नहीं छीन सकता. ये नहीं है कि आप कुछ भी जो मनमाने जुर्म करते रहें और आप सोचें कि जी हमें तो पनिश ही नहीं किया जाएगा. नहीं, एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ. अगर कानून का सिस्टम जो है वो तो फॉलो होगा ही होगा. फॉर एग्जाम्पल, किसी ने किसी की मर्डर कर दिया, कोई लूटपाट कर दिया, ये सोचें कि हमें जेल नहीं जाना पड़ेगा, जी हमारी तो लिबर्टी है, वी कैन मूव हेयर एंड देयर. नो, दैट इज़ नॉट. पर्सनल लिबर्टी है बट विदाउट हार्मिंग अनदर्स. आप दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे. इट इज़ योर दीज आर योर राइट्स ऑल्सो. क्या राइट है आपका? आपकी पर्सनल लिबर्टी का. बट इट इज़ योर ड्यूटी ऑल्सो दैट मेंटेन अदर्स फ्रीडम also. So students, these were the right to personal liberty different forms. Now students, I am coming to my next topic, and that is right to constitutional remedies. It is also very important right. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जो है अमंग ऑल राइट्स से जो है यह सबसे इम्पॉर्टेंट है. यू विल अमेज टू नो कि वाई इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अबव ऑल, अभी मैंने बोला राइट टू लिबर्टी भी इम्पॉर्टेंट है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ भी इम्पॉर्टेंट है. वाई? विदाउट द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, इसके बिना अनदर 5 राइट्स नॉट हैविंग एनी टाइप ऑफ इम्पॉर्टेंस, बिकॉज इट इज़ वेरी मैंडेटरी. मैंडेटरी कैसे है कि इफ़ एनी ब्यूरोक्रेट इज़ गोइंग टू एक्सप्लॉइट एनीबडीज़ राइट, ही और शी कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट or now High Court also
कि that so and so has been exploited me in so and so manner. Article 32 guarantees the right to move the Supreme Court by appropriate proceeding for the enforcement of the right conferred by Part थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 32 तो सुप्रीम कोर्ट को देता है अधिकार. एंड अंडर आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स को भी एम्पावर किया गया टू इशू ऑर्डर्स, डायरेक्शंस एंड रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स. द जुडिशरी कैन सेट असाइड लॉज. जुडिशरी जो है द आवर थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, जुडिशरी कैन सेट असाइड लॉज एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स इफ दे आर वायलेटिंग द फंडामेंटल rights. So coming to my next topic, and that is directive principles of state policies. These are also very much important and necessary for our country. Do agree with this point? Directive principles of state policy are not having any type of legal force with them. उनके पीछे उनके पास कोई पावर नहीं है. देयर इज़ नो लीगल फोर्स बिहाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स. दीज आर वेरी मैंडेटरी. आर्टिकल 36 to 51 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं, बिकॉज दीज आर जर्नल डायरेक्शंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच दे शुड कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ और मेकिंग लॉज. जब कानून बना रहे हैं देश की वेलफेयर के लिए तो उनको इन्हें साथ लेके चलना चाहिए, एंड दे शुड डू दैट. रखें, करें, आर इन द नेचर ऑफ अफर्मेटिव इंस्ट्रक्शंस टू द गवर्नमेंट टू डायरेक्ट इट्स एक्टिविटीज़ टू सर्टेन थिंग्स. तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर नॉट जस्टिकेबल. टाइप्स ऑफ आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी बता देती हूँ. टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, टू सिक्योर अ लिविंग वेज एंड डिसेंट कंडीशंस ऑफ वर्क, then promote international peace and security, and the most important is that to separate the judiciary from the executive. Students, you have early studied that government is having 3 different types of organs: executive, judiciary and legislature. So executive should be free, separate from the judiciary. Next students, our topic is what is the aim of directive principle. aim जो है बहुत इम्पॉर्टेंट्स हैं, वो भी सारी चीज़ें ही इसमें इम्पॉर्टेंट ही हैं. What is that? Social and economic freedom. Social and economic freedom is very much necessary. Aim at realization of social and economic freedom, without which political freedom has no meaning at all. The aim of these principles is to establish a welfare state. Then Article 37 declares these principles to be fundamental in the governance of the country, and it shall be the duty of the state to apply the principles in making laws. The aim of the directive principles is to promote the realization of the high ideals set forth in the preamble of the Constitution. Whatever the things, whatever the points, guidelines, ideas has been mentioned in our preamble, तो इन्हीं का ही उस preamble से ही हमारा जो है लेके दिशा निर्देशन क्या करना है, to promote high ideals. Now coming to my last topic of today, that is differences between fundamental rights and directive principles. A lot of differences between fundamental rights and directive principles. Directive principles are not justicable, as I have already told you. Fundamental rights are justicable. Fundamental rights are mandatory, while directive principles are optional. फंडामेंटल राइट्स किसी भी गवर्नमेंट के लिए, इफ़ दे वांट टू बी अ वेलफेयर गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड, तो उनके लिए ज़रूरी है दैट दे शुड डेफिनेटली इम्पार्ट देयर सिटीजन्स टू फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स आर मैंडेटरी while directive principles are optional. Fundamental rights concern the individual, but directive principle concern the society. Other words, I want to tell you कि मौलिक अधिकार जो हैं व्यक्तियों की पर्सनल स्वतंत्रता देते हैं, जबकि
दिशा निर्देशन सिद्धांत जो हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हैं, वो समाज का भी ध्यान रखते हैं, सोसाइटी का भी रखती हैं। द एम ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, राजनीतिक लोकतंत्र देना है, लोकतंत्र का माहौल बनाना है राजनीतिक रूप से, लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर्थिक लोकतंत्र का बनाता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी? पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में ईच एंड एवरीबडी इज गेटिंग इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी में एवरीबडी इज गेटिंग राइट टू वर्क, राइट टू अपॉर्चुनिटी टू वर्क, equal status also. I hope students that definitely you will go through all these topics of today, whatever the topics we have studied, reminding you again: right to personal liberty, right to constitutional remedies, directive principles of state policy, aim of directive principles, differences between fundamental rights and directive principles. Thank you students, and go through all these videos properly and contents. If you are having any problem, then you can call me or text me message.